honorable professors from different departments, my dear friend and colleague Mr. Moin Khan, people from career counseling cell of the college, people from Chanakya IAS Srinagar, dear students and friends, a very warm good afternoon to all of you. So I would like to begin with few examples, some inspiring examples of civil servants who are qualified before. Okay, so I would like to ask you, how many of you know about Beno Jafin? Everything all right? How many of you know about Beno Jafin? No one? So Beno Jafin was a 100% blind girl from Tamil Nadu, and she went on to become an IFS officer, and she is currently serving in Indian Embassy in Paris. Okay, so next one, how many of you know Ansar Ahmed Sheikh, a boy from Maharashtra? Ansar Ahmed Sheikh, you know him? Okay. So Ansar Ahmed Sheikh also studied in a degree college like the one you are studying in Maharashtra, and he belongs to a very humble background. उनके जो father है, he drives an auto rickshaw, and then he went on to become an IAS officer at a tender age of 21 years, which is just the beginning. So next we have Ira Singhal ma'am, was All India rank 1 in 2014. Okay, she also is physically like specially abled and differently abled. She has a problem called scoliosis, जहाँ पे spine में एक curvature होता है. So she appeared for the exam 4 times, but in the end she also fought a court case also. So ultimately she is in the IAS now. Then let's come home. We have a girl from a remote village of Kupwara. She was a doctor, then went on to become an officer in the state services, then became the first IPS officer of Kashmir, and later went on to become the first IAS officer of Kashmir. She is Dr. Ruveda Sanam. So my purpose of telling you about all these examples is that we all of us here connect with one or the other in one or the other way. So knowing that there definitely are struggles for everyone. There are different kinds of challenges. Every person goes through different challenges. All of us here fight our own battles in life. But then in the end, it is something, when you set a goal, it is definitely achievable, because human beings have an immense potential which they fail to realize. Okay? So the next thing I would like to talk about is, why are we here? What is the purpose of this workshop? और जो session यहाँ पे हो रहा है, what is the purpose of this? The purpose is straight away one thing that we want to tell students who are in college, कि we should be a little serious, more focused, जैसे सर ने भी बोला, कि we need to set a goal and then we have to work in that direction towards our goal. That's our one purpose. The second thing, when we talk about district Bandipora, I believe all of you belong to this district only. So in this year's JKPSC 2022, we have only one selection from this district, when the average is around 11. So district Bandipora, we are short by around 10 selections as per the average of the UP. So people who are in college and who have decided कि हमें civil services में ही जाना है, we need to gear up and we need to start working from this point onwards, so that to match the competition in the, not only in the UT, but then you also have to aspire for bigger goals like the one of becoming IAS and IFS and IRS and IPS, because we need people in services, in bureaucracy, in civil services, not only in the UT, but definitely in the country, in the nation as well, right? So that is why we are here. Then second thing, जैसे सर ने, Mr. Moin Khan also told you that civil services is not the end of it. It's not the end of life. It's not everything
under the sun that we should pursue. There are other things also. People जो यहाँ पे हैं, there would be people who want to go in academics, maybe professor बनना है, because we also have to, because the bedrock of everything is a good education system in the end. So जो people academics में जाना चाहते हैं, please pursue your academics seriously. किसी के अदर गोल्स हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई डिफरेंट वेंचर्स में जाना चाहता है, तो प्लीज बी अ लिटिल मोर सीरियस एंड ट्राई टू वर्क अपने स्किल्स, जो उस सेगमेंट के स्किल्स है उनको होन करें, उनको और लाइक पॉलिश करें उन स्किल्स को, सो दैट यू बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड. ओके, दैट शुड बी आवर एंड गोल. Then why? Because I have qualified this examination, civil services, and I would be a civil servant in future. I would tell you why you should go for civil services. I would like to tell you why civil services is a good service to be in, or a good job to be in. Usme, the first thing is that you definitely earn a decent living, a living where you can afford to be honest. There is one civil servant, a retired civil servant. He was the Coal Secretary of India, Mr. Anil Swarup. He has written in his book, the book is titled Not Just a Civil Servant. He says that if I am born again and if I am able to make it, given the competition that is increasing, I would like to be an IAS officer again. Because this service provides me the opportunity, it provides me the affordability to be honest in this socio-economically vitiated environment, jahan pe the honesty we don't see. But in civil services, you can be honest and then earn a decent living also, which would be sufficient for your livelihood. The second thing, of course, is the public welfare, the scope of public welfare which is there. The scope of जो आप अच्छी चीजें कर सकते हैं सोसाइटी के लोगों के लिए, different walks of life. That takes me to the third point, that there is a huge diversity in this job. It's not a monotonous job. आपको रोज एक ही काम नहीं करना है. You would be posted in different departments, different fields. Sometime you'll be looking after education, sometime you'll be looking after rural development, kahin pe you'll be looking to the health and medical education maybe. So there is a kind of diversity, okay, जो आपको एक interest, आप एक interest develop करते हैं अपनी services में और अपनी profession में. Then of course you are in leadership roles, you are in decision making roles, you take things in your own hands. जो भी आपको affairs लग रहे हैं, state of affairs are not going good, कोई भी problems आप identify कर रहे हैं तो उनको tackle करने का आपको एक platform मिलता है civil services के through. And then ultimately of course you should be the change you wish to see in the world. Now I come to the next part of this this thing lecture, that those students जिन्होंने civil services को अपना goal बनाया है, people who want to appear for these competitive examinations, maybe the JKPSC, and I hope कि UPSC में भी please आप सोचिए, at least you start thinking about it, start giving it a due consideration कि UPSC is also something which is doable, because people from here have done it, है ना? Even though there might not be an IAS officer yet from Bandipora, but that's an incentive well enough in itself to be the first IAS officer from the district. यहाँ से maybe if we get someone, I hope so. What you should be doing in the college? अब जो students जिन्होंने decide किया है कि civil servant ही बनना है और यही exam लिखने हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? I will give you some 4-5 suggestions. Maybe you can work on those. One thing is definitely जो आपका अपना subject है, जो भी किसी का maybe geography होगा, किसी का history होगा, अब देखिए कि क्या ये सिविल सर्विसेज के सिलेबस में के साथ मैच करता है. इज देयर स्कोप के ऑप्शनल मैं यहां से ले सकता हूं, ज्योग्राफी जैसे है, हिस्ट्री है, किसी का पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस, तो उस सब्जेक्ट में ना, अपने सब्जेक्ट में अच्छे से जो आपका पिछले 3 साल का जो करिकुलम रहा है, सिलेबस रहा है, उसको एक बार अच्छे से पढ़िए. अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसमें कीन इंटरेस्ट डेवलप कीजिए अपने कोर सब्जेक्ट में, ठीक है? बिकॉज यू कैन चूज एन ऑप्शनल फ्रॉम योर सब्जेक्ट, फ्रॉम योर बैकग्राउंड. उससे आपको एक हेल्प भी मिलेगी कि यू डोंट हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू वेंचर इनटू समथिंग टोटली डिफरेंट, मे बी एंथ्रोपोलॉजी और समथिंग जो पॉपुलर ऑप्शंस रहते हैं. फिर वन इज दिस थिंग. द सेकंड थिंग इज कि आई बिलीव कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव नॉट स्टडीड देयर 11th 12th so very well,
उनके कुछ जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक बुक्स जो हमारे सिलेबस में है, जैसे सर ने बोला कि सिलेबस में कौन कौन से आप सिलेबस लाएंगे, फिर देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स की जो बेसिक एनसीईआरटीज आती हैं 6 to 10 पहले एक बार वो आपने कर दिया 6 to 10, once you are confident yes this much I know, then you will supplement it with 11th and 12th NCERT books. ठीक है, बिकॉज ब्रॉडली दैट इज द सिलेबस. 11th-12th का जो होता है सिलेबस वही इसका जनरल स्टडीज का सिलेबस होता है, थोड़ा एक एक्सटेंड करके, और करंट कॉन्टेक्स्ट में जब हम उसको पढ़ेंगे दैट बिकम्स द सिलेबस फॉर सिविल सर्विसेज. एक्चुअली जनरल स्टडीज तो वही होता है, बट एन ऑप्शनल इज ऑफ कोर्स द डिग्री लेवल, जो मैंने बोला कि आप कोर सब्जेक्ट में कीन इंटरेस्ट डेवलप करेंगे. देन आई वुड टेल यू कैन ऑल्सो डेवलप a habit of reading a newspaper. ठीक है, मे बी 15-20-30 मिनट्स अ डे. आप कॉलेज आए, कैंटीन आए, न्यूज़पेपर कहीं पढ़ा है, तो मे बी 20-25 मिनट्स यू कैन जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर. अब इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? व्हाट वुड यू लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड, जैसे सर ने बोला कि द फर्स्ट लाइन इन द प्रीलिम्स का जो पेपर है वहां है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो यू वुड गेट टू नो कि दुनिया में हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. ठीक है, तो then you will also maybe somebody might think about it कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. there would be discussions around it, so there would be something to talk about, something good to discuss about. तो एक perspectives आपको मिलेंगे दुनिया के कि क्या हो रहा है. one would be that. second thing, सर ने CSAT के बारे में बात की, तो there is one component where people from degree college जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, बीटेक से नहीं आए, तो मैथ्स तो नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से. बट देन देयर इज अ सेगमेंट इन CSAT which is comprehension, जहां पे आपके पैसेजेस पढ़नी होती है और उनका एक आंसर देना होता है. तो वंस यू रीड एडिटोरियल्स तो यू गेट दैट हैबिट, आपको हैबिट डेवलप होती है फास्ट पढ़ने की और फास्ट उस पैसेज को समझने की और फिर आंसर करने की. तो यू कैन क्लियर द पेपर आल्सो, यू गेट गुड कंप्रहेंशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी. यू वुड आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू राइट वेल. जब आप एडिटोरियल्स देखेंगे कि हाउ वेल दे आर रिटन इन 1000-1200 वर्ड्स, कोई एक टॉपिक कितना कंप्रहेंसिवली किसी ने कवर किया होता है, if that flow is maintained, the coherence in the writing is maintained, तो आप वो भी सीखेंगे कि कैसे एक अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है. ठीक है, so that's about newspaper. 20-25 minutes a day you can do that. But apart from academics, what you can do, you should also take up a hobby. Definitely you should take up a hobby at this time. ठीक है, कोई एक hobby, it helps you maintain the mental balance. At times जब हम academics में when we are disturbed, when we are perturbed, or mental health is not fit, okay, so we are dealing with anxiety and other issues maybe. When you have a hobby to pursue, that hobby becomes that उससे ना you get that mental balance. Okay, तो please pursue look for some hobby, a productive hobby जो होगी. कोई भी different kinds की hobbies होती हैं, तो please choose one as per your tastes. Then one thing is, we were discussing that civil services, it's not only about academics, it's about other things also. The managerial thing, the management thing, the administration thing, the diverse skills that you need to have. वो diverse skills आप कैसे develop करेंगे? How would you develop those diverse skills? Please participate in the extracurricular activities जो आपके कॉलेज में होती है. कोई डिबेट हो रहा है, कोई essay writing हो रही है, पोस्टर कंपटीशन हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, तो उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए. एंड देन अबव ऑल प्लीज डेवलप गुड क्वालिटीज व्हिच वी ऑल नीड. सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सेशन विद अ पोएम. एक रुडयार्ड किपलिंग एक ऑथर है, उन्होंने एक पोएम लिखी है इफ नाम करके. तो उनका जो कंक्लूजन है, the conclusion of the poem is, it's about time management, it's about giving your everything to it. Okay, हम अपना बेस्ट कैसे दें और टाइम को मैनेज कैसे करें. तो about this he writes that if you can fill the unforgiving minute, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, I would like to say again that if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything in it, and which is more, you will be a man, my son. क्या इससे सिलेक्शन हो रही नहीं हो रही है? पहले आप देखते हो कि नहीं एक ही हो रहा है, 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, बट देन देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग आल्सो. तो प्लीज उसके परसेंटेज
कितने अपियर हो रहे हैं और कितने सिलेक्ट हो रहे हैं. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ऑप्शनल और आपने अच्छे से किया हुआ है, यू डोंट नीड टू गो इनटू वेंचर इनटू अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर एंड फिर आपको उसमें यू विल हैव टू बी एक्सपीरियंस इनफ. क्योंकि ऑप्शनल एक वो सब्जेक्ट होता है जहाँ पे यू नीड टू बी द एक्सपर्ट, नॉट द एक्सपर्ट बट यू नीड टू बी नोइंग मच अबाउट इट एज कंपेयर टू जनरल स्टडीज. तो डेफिनेटली अगर किसी का बैकग्राउंड ऐसा कोई ऑप्शनल है और वो सिलेबस में भी है, यू कैन चूज दैट एज योर ऑप्शनल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो नीड टू लुक एट द स्कोरेबिलिटी कि स्कोरिंग है नहीं, बिकॉज जेकेपीएससी में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उतना स्कोर नहीं कर पाते और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, तो वो एक नेक्स्ट फैक्टर हो जाता है स्कोरेबिलिटी. एंड द थर्ड थिंग इज डेफिनेटली योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. अगर आपने कोई डिग्री में कोई सब्जेक्ट ले लिया बट देन यू हैव रियलाइज कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज चूज अ सब्जेक्ट इन विच यू हैव एन इंटरेस्ट. कभी इसमें टाइम लगता है प्रोसेस में, इट टेक्स 2-3 years मिनिमम, किसी को ज्यादा भी टाइम लगता है, तो यू हैव टू स्टे विद दैट ऑप्शन आल्सो. सो इट इज सेड अबाउट द ऑप्शनल दैट इज समथिंग लाइक मैरिंग समवन, यू हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. तो ये 2-3 चीजें हैं. देन ऑफ कोर्स यू हैव सम मेंटोरशिप अवेलेबल और नॉट, कि आपके पास मेंटोर्स इसके अवेलेबल है, आपकी टेस्ट सीरीज होगी आगे अवेलेबल नहीं होगी. तो these would be 3-4 factors to be considering while choosing an optional. So broadly you would shortlist out of the list that is given 40-45 optionals, उसमें से आप shortlist करेंगे 2-3 and then you would look at the syllabus of those options, the PYQs of those, and of course an interest जहाँ पे फिर your power would be, you would be taking that option. Okay. So now the next question here is how to manage IAS preparation along with college and how to manage newspaper reading. I think I touched upon these questions, but then देखिए IAS preparation, if you have decided कि IAS करना है, UPSC में ही जाना है, तो first thing would be getting the syllabus of UPSC. Okay, getting accustomed to the pattern of the exam. कि exam process है क्या, ये डिमांड क्या करती है, prelims मेरा कैसे होगा, mains कैसे होगा, and then of course deciding your optional in the college. और अगर आपका ऑप्शनल सिलेबस में है तो प्लीज रीड योर ऑप्शनल वेल इन द कॉलेज. जब आप डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ें ड्यूरिंग द कॉलेज ओनली, व्हिच विल हेल्प यू टेकिंग इट एज एन ऑप्शनल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग आईएएस. तो ये हाउ टू मैनेज न्यूज़पेपर रीडिंग कॉलेज में, आई थिंक ठीक है, करंट अफेयर्स होता है वो 1-2 साल का रेलेवेंट हो जाता है जो आपका अटेम्प्ट ईयर होगा. इफ इट इज 25 तो 24-25 वुड बी मोर रेलेवेंट. But then to develop that habit, you can dedicate 20-25 minutes to newspaper reading daily on a daily basis while you are in college. You have any other questions? जो भी आपने आंसर देंगे. एज ए टीचर हमारे पास एक इशू आया हमने, जो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, पर्टिकुलर ब्राइट स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में ये होता है कि हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे और यहाँ घर पे बैठ के सिविल सर्विस के लिए तैयारी करेंगे. तो हमारा ओपिनियन है कि हम उनको बोलते हैं कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है. आप एडमिशन लेते हो तो घर पे बैठते हो सिविल सर्विस के लिए और आप रेगुलर एजुकेशन को आपने पार्ट टाइम बना के रखे हो. तो आपके इसके बारे में क्या राय है? तो बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, जब आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं, आपने कहीं पे एडमिशन लिया है, तो जब आप एजुकेशन प्रोसेस में एंटर होते हैं तो आप सिर्फ इसको एज ये ना देखें कि हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है. इन द एंड मे बी सर रेशो के बारे में बता रहे हैं 0.02% इज देयर, ठीक है. इन द एंड इट सिविल सर्विसेज हैज नॉट टू बी द एंड ऑफ इट, ठीक है. एजुकेशन प्रोसेस में इट डज नॉट ओनली टीच यू एकेडमिक्स, इट टीच यू द लाइफ लेसन्स. जो वैल्यूज आपको जिंदगी गुजारने के काम आएंगे, the things that you need in life in broad. And then of course civil services also demands people who have a diversity in their personality. उनकी personality में diversity होनी चाहिए. वो आप घर पे बैठ के you would not be able to develop that diverse personality. आपको कमरे में बंद होके पढ़ाई नहीं करनी है. It's not that kind of an exam. There are some exams जो ये डिमांड करते हैं कि आपको एक जगह बैठ के सिर्फ पढ़ना ही है. But this is not that kind of an exam. This is an exam which demands an overall development of the personality. Finally, you have to face an interview board,
Then you should have good communication skills. You should have emotional intelligence. वो सब कब आएगा? वो तब आएगा when you are interacting with people in daily life, when you are interacting with your faculty, with your teachers, with your fellow students. Then you also learn discipline. जो सर ने बोला कि discipline is a very crucial thing to qualify the exam. So it is in the institute only you learn discipline. So I would request students to not take this कि आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, but then you have to get enrolled in an institute also, जहाँ पे आप डेली जाके लाइब्रेरी भी देखेंगे, बुक्स भी देखेंगे, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपकी एक डाइवर्स पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है? So that should be the approach while dealing with this exam. So I would like to extend my best wishes to all of you. You do well in your careers ahead. My best wishes are with you. Thanks a lot. Thank you.